اور ہمیں شریک ہونا بھی چاہیے. اور اب سے لے کے انشاءاللہ کچھ 1 گھنٹے تک تقریباً ہم چاہیں گے ہم بطور خاص ان افراد کو نمائندگی دینا چاہیں گے اپنے خیالات کی, اپنی خوشیوں کے اظہار کی, کہ جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں دوحہ میں مقیم ہیں, دوحہ میں رہتے ہیں, اور قطر کے اس نیشنل ڈے, اس قومی دن میں وہ بھرپور انداز میں حصہ لے رہے ہیں. اور اگر کسی ملک کی کمیونٹی کی قیادت اگر کسی فرد کے پاس ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس ملک کا ایمبیسڈر, اس ملک کا سفیر, وہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے اور حقیقتاً وہی ان کی قیادت کر رہا ہوتا ہے. اس وقت ہم اردو اسٹوڈیو سے ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر محترم جناب جسیم الدین صاحب کو, کہ وہ اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور ہماری اس پروگرام میں جو شرکاء ہیں ان میں کچھ ساتھی تو جسر کہتے ہیں کہ وہ بیہائنڈ دا مائک وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور کچھ افراد جو ہیں وہ چھپے ہوئے سپاہی ہیں, وہ اسٹوڈیو سے باہر کام کر رہے ہیں. اور جو اسٹوڈیو کے اندر ہیں وہ ان میں ہمارے اردو ریڈیو کے ڈائریکٹر محترم شاداب احمد خان صاحب ہیں, میں آپ کا ساتھی یا آپ کا ساتھی سیف الرحمان ہوں. ہمارے مہمان, معزز مہمان ہز ایکسیلنسی, اور اگر ہم بطور جس کو کہتے ہیں کہ خالص اردو میں بات کریں تو عزت مآب جناب محمد جسیم الدین صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اردو ریڈیو کے اس اسٹوڈیو میں خوش آمدید, ویلکم. اور قطر کے نیشنل ڈے کے موقع پر, قطر کے اس قومی دن کے موقع پر ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے اسٹوڈیو میں. Thank you very much. Very happy to be here. And let me also take this opportunity to convey my very sincere congratulations to the government of Qatar and to our brothers and sisters in Qatar and all the residents who live here from different countries. A big congratulations on the occasion of the National Day of Qatar. And I just want to say that this country is very lucky to have very dynamic leadership in this country. Mm-hmm. And I would also like to congratulate the leadership and the people, and I wish them all the very best. اور میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں, آپ ہماری زبان سمجھ رہے ہیں, ہم آپ سے کیا بات کر رہے ہیں. ہم دونوں گو اس میں مشکل ہو رہی ہوگی کہ اردو زبان میں گفتگو کی جائے یا کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو محترم جسیم الدین صاحب نے فرمایا کہ وہ یہاں پر قطر کی حکومت, قطر کے عوام اور اہل قطر کو مبارکباد دے رہے ہیں, مبارکباد دینا چاہتے ہیں اس قومی دن کی. اور قطر کے ساتھ یہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے تعلقات بہت مستحکم اور مضبوط تعلقات ہیں. اگر ہم محترم محمد جسیم الدین صاحب, اگر آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ آج جب کہ یہاں کا نیشنل ڈے یا قومی دن کے موقع پر جو بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں ان کی فیلنگز کیا ہیں؟ You can just give us a little bit of information about the kind of feelings that the people from Bangladesh have about this country. We wanted from you so that we'll kick-start this show, and later on we'll indulge into too many of conversations. Yes, on air, okay. Sir. We are on air now. Okay. We two are together sharing the one mic, so I'm also with him on air. Yeah. Okay. Just to keep on translating what he wanted to ask. No, so sure. This is what he's asking, what the message you'll start to give before we kick off this program initially. What's the message for the Bangladeshi community from your side? Two messages. First, as I said, I began with a message to our Qatari brothers and sisters on the very happy occasion of the National Day. I wish them all the very best. And for our Bangladeshi brothers and sisters who are living here, working here, I would like to also congratulate them because on 16th of December we had our Victory Day celebration. So I wish them all the very best. But they are very hard-working people. And I would like to tell them that, keep up the good work. Work with reputation and share the good stories about Bangladesh with our Qatari brothers and sisters. As you know that we have about 400,000 people in this country who are contributing to both our economies as well as to the Qatari economies, and they are involved
in the big construction activities that is going on run up to the 2022 World Cup. But then again, it comes to my mind before I forget that I would also like to congratulate the Qatari leadership on winning the bid for Asian Games 2030. 2030, That's yes. a big one. And I think that the kind of infrastructural facilities they have put in place, this is going to be a big success. If I may, I would like to say a few words in Bangla to our brothers and sisters from Bangladesh. আমি আপনাদের সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে এবং আপনারা অনেক পরিশ্রম করেন, দেশ থেকে অনেক দূরে আছেন, পরিবার পরিজন থেকে দূরে আছেন এবং আপনারা আপনাদের কাজের মাধ্যমে দেশের জন্য যে অবদান রাখছেন সেটা আমরা প্রশংসা করি। এই দেশে থাকবেন, এদেশের স্থানীয় যে নিয়ম কানুন সেটা মেনে চলবেন এবং আমাদের যে ভালো ভালো কথাগুলো আছে, ইতিবাচক গল্পগুলো আছে, সেটা আপনারা কাতারে যে বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন। তা আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আর এই করোনার সময় সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন। আর সামনে 2021 সাল আসছে, সেই 2021 সালের আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। اور ہمارے سفیر محترم نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر محترم جسیم الدین صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جب یہاں بنگلہ دیش کمیونٹی کے حوالے سے بتایا کہ بہت جفا کش کمیونٹی ہے اور وہ قطر کی تعمیر میں ایک عرصے سے حصہ لے رہی ہے. ان کی تعداد یہاں پر آپ نے تقریباً 4 لاکھ بتائی. 400,000 یوتھ فارمر, 4 لاکھ بنگلہ دیشی باشندے یہاں قطر میں کام کر رہے ہیں, محترم نے بتایا. اور وہ قطر کی خوشیوں میں شریک ہیں, بہت جفا کش ہیں, بہت محنتی ہیں اور محنت سے کام کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں. پھر آپ نے کچھ بنگلہ زبان میں اپنے شہریوں سے بات چیت کی, اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں سے بات چیت کی اور انہیں اس دن کی مبارکباد بھی دی اور ان کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے, انہیں بھالو رکھے, تو ان کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے اور وہ اس ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے. اور 2021 میں جو کہ ابھی شروع ہو رہا ہے اس کی مبارکباد دی. اور اس سے پہلے ساتھ ہی انہوں نے اپنے نیشنل ڈے کی, جو کہ 16 دسمبر کو منایا جاتا ہے بنگلہ دیش کا قومی دن, اس دن کی مبارکباد دی. اور اس میں ساتھ ہی یہ بھی کہ قطر میں انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں یا ان کی قیادت کرتے ہوئے اس دن کو منایا ہے. یہ سارے موضوعات جو میری سمجھ میں جتنی مجھے بنگلہ آتی ہے اس میں یہی سمجھ پایا ہوں. I hope that at the end of the show you will learn a little bit of Bangla and maybe we can end with a small conversation in Bangla as well. Yeah. Well, that's a fantastic translation of yours. Thank you, sir. Yeah, I'm very impressed. With this, now we'll move to a question that, sir, you are namesake of one of the popular Bengali Bangladeshi poet, Jasimuddin. So we wanted to start with this note, but we have started with the message, that too on a very nice way. So now I wanted to know, are you fond of reading, reciting poetry? And if so, if you can say one of the couplet in Bengali, one more time Bengali. Yes, indeed I am. I think all the Bangladeshi people, they're very fond of poetry. And you know about the Nobel laureate Rabindranath Tagore. They call it Tagore, but it is Rabindranath Tagore. And our national poet, Qazi Nazrul Islam. Those are two famous poets. Of course, Jasimuddin, who is my namesake, he's also very famous. He's known, we call in Bangla, he's the Pollikobi, the poet of the rural areas. And he has written many beautiful poems. And the young Bangladeshi people, they also try their hands in poetry writing. Well, I am one of those. I tried my hand in poetry writing as well. So, and I published 2 books of poetry. These are short, small books. And if you want to listen to a few lines, maybe I can share on this occasion. We would love to. And this one is about independence of Bangladesh. And it's a long one, but I will read 4 or 5 lines. This also refers to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And this year, incidentally, we are celebrating the 100th birth anniversary of the father of Sheikh Mujibur Rahman, who is the father of the nation. So let me just recite it. It's called Shadhinota, which is independence. Amar অহংকারে তুমি নিরবচ্ছিন্ন স্লোগান, স্লোগানের শব্দে বাতাসে জন্মে নতুন গান, তার ধ্বনি আকাশ ছোঁয়ে ফিরে জমিনের পর ছুঁয়ে গেছে একদিন আমাদের অস্তিত্বের শিকড়। তুমি ৭১-এর ৭ মার্চের আগুন,
দৃপ্ত স্লোগানে কেঁপে যাওয়া রেসকোর্সের ময়দান, তুমি বঙ্গবন্ধুর বজ্র কণ্ঠের উচ্চারণ, কোটি জনতার মহাকাব্যিক বয়ান, তাই মুক্তির মন্দিরে রক্তের অক্ষরে হয়ে আছো চিরভাস্বর সবুজি প্রান্তরে, তুমি সূর্যের রঙে আছো মিশে আকাশের জমিনে, তুমি আছো শ্বাসে, আছো হৃদয়ের স্পন্দনে, তুমি বাতাসে ছন্দায়িত লাল সবুজের দোলা, তুমি একটি শব্দ कोटि प्राणीर मुक्तिर मेला। बाकी आपके वतन आपके लिए दुलार है, आप अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हैं, उसे उसके साथ जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, इस तरह अपने जज्बात का इजहार अपनी माँ के लिए, अपने धरती माँ के लिए आपने किया। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा उसलूब है। और अगर हम अपने इस नेशनल डे की तरफ वापस आना चाहे नादिया जी, और उसमें मैं ये चाहूँ क्योंकि हमारा कतर का, हमारी खुशियाँ कतर के साथ है और कतर खुशियाँ मना रहा है। कतर ने बहुत से शोबों में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। उनमें स्पोर्ट्स का शोबा भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें खारजा ताल्लुकात भी हैं, उसमें लोगों के बहरानों को, लोगों के मसाइल को हल करने के, उनके आपस के इख्तिलाफात को हल करने के लिए, सुलह कराने के लिए कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। बतौर ख़ास अगर सूडान के मसला था, फिर अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट का और तालिबान का वो मसला, उस पर उन्होंने सुलह कराई है। इसी तरह स्पोर्ट्स के शोबे में अब वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद फिर एशियन गेम्स आ रही हैं जो कि 2016 में आई थी, उसके बाद अब दोबारा भी आ रही हैं। मुख्तलिफ फील्ड्स में कतर तरक्की कर रहा है और मुसलसल तरक्की करता चला जा रहा है। ऐसे में वो कौन को ऐसा फील्ड है जिसमें आप कहें कि हाँ जी ये तो टॉप पे गया है, इसमें मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, क्या आप उसकी कोई निशानदेही कर सकते हैं? Well, he is asking you that Qatar has been like flourishing in all the directions, or horizontally, vertically. If we talk about one of the specific field, what do you think is that one which impresses, which you particularly would like to say and talk about? Well, I will not pick one. I will pick three, actually, because there are so many things Qatar has been doing. I came here 3 months ago, and I have seen during these 3 months, that's why I am picking three, because this happened during these 3 months. It didn't happen in 1 month. It happened in 3 months. The first one, of course, is I would say the lifting of the restrictions, and is the fourth phase of the restrictions related to the COVID-19. And I think, all the countries around the world, they are trying to find a formula, the effective formula to contain the virus. There is no textbook formula how to deal with it. There have been virus earlier. But I think Qatar, they have come up with a solution which is very effective. At the end of the day, whatever solution you come up with, it's the result, whether it's working on the ground. I think Qatar did a fantastic job. If you look at Europe or in other parts of the world, they are now coping with the second wave of the virus. But this country, we are here. We are talking face to face. We are not doing it over telephone. That's a testament of the fact that the Qatar did a fantastic job. This is one. The second one was the labor reform law. And I think that's a big one. It's a revolution, I would say, and Qatar is playing a pioneering role as far as the labor reforms are concerned. And I think this is also an example for other countries who would like to make some changes in this area. So I'd like to congratulate the Qatari leadership for this as well. And I think that this is going to bring a lot of changes in the lives of the workers, in the lives of the Qatari people here, both the employers and the employees as well. The third important development which I have seen during these 3 months is the trying to connect to the rest of the world. While there is a big talk about the deglobalization, people are looking more and more inward rather than trying to connect to other countries, including the major players on world stage. Qatar has shown a very different model. Qatar is hosting peace talks in this country, and Qatar is going to different parts of the world with their aid, with their helping hand. Qatar is connecting to Bangladesh very substantially. So I would say that Qatar is changing the narrative of deglobalization, and bringing to the table a very powerful narrative, the narrative of globalization. And all these things were possible because Qatar has very good political leadership. The wise leadership, the visionary leadership. They're not thinking in terms of 1 or 2 years, they're thinking long term. And I think that this is remarkable. This is not only good for Qatar, but whoever wants to have a model to replicate in terms of the leadership, they have an example in Qatar.
बहुत 3 पॉइंट आपने चुने और वो भी बहुत जबरदस्त. और पहला पॉइंट जिसका मोहतरम सफीर मोहतरम ने इंतखाब किया वो ये कि कतर ने सारी दुनिया को मामला दरपेश है, एक मुश्किल दरपेश है, और वो है कोविड-19 की या कोरोना की. तो सारी दुनिया परेशान भी है. यूरोप में तो उसकी दूसरी लहर आ चुकी है, लेकिन कतर ने किस तरह इस लहर को और इस वबा को कंट्रोल किया है, ये दूसरी दुनिया के लिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है. और इस चीज ने मोहतरम सफीर मोहतरम को बहुत मुतासिर किया कि कतर ने किस तरह यहाँ पर काबू पा लिया है, और वो जो पाबंदियां लगाई गई थी आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां खत्म की जा रही हैं. वरना अब भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं, उनमें मजीद शिद्दत लाई जा रही है, लेकिन कतर इसमें कामयाब हो गया कि वो पाबंदियों को नरम कर रहा है. दूसरा पॉइंट जिसने मोहतरम सफीर मोहतरम को बहुत ज्यादा मुतासर किया वो ये है कि कतर ने यहाँ के लेबर लॉ में लेबर से मुताल्लिक, मजदूरों से मुताल्लिक, अफरादी क़ुव्वत से मुताल्लिक कानून में बड़ी बुनियादी तब्दीलियां कतर लाया है. और ये तब्दीलियां दूसरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई हैं, और ये वाकई एक अहम पॉइंट है और बहुत अहम पॉइंट वाकई बनता है. और तीसरा पॉइंट जिसका जिक्र सफीर मोहतरम ने किया वो ये कि कतर की क़यादत बतौर ख़ास सियासी क़यादत वो महदूद फासले तक नहीं देख रही, बल्कि वो बहुत दूर रस निगाह की हामिल है, और वो पूरी दुनिया के ग्लोबलाइज अंदाज में देख रही है, और उसमें दुनिया के सामने उनको एक पेज पर लाने की कोशिश कर रही है, और उनको मेज पर जब इकट्ठा कर रही है. और ये वही क़यादत कर सकती है जो आलमी सतह पर सोचे, अपनी सिर्फ ज़ात की हद तक नहीं बल्कि एक आलमी अंदाज में सोचे, और वो जो सोच है वो हमारे इस दौर में. ये 3 पॉइंट जो हम सफीर मोहतरम ने जिक्र किया, और मुझे हुए ही 3 महीने हैं इसलिए मैं 3 पॉइंट का जिक्र किया. बहुत अच्छा लगा ये भी कि 3 माह में आपने 3 पॉइंट्स का तयन कर लिया. आमतौर पर मोहतरम सफीर मोहतरम यहाँ जब हम अपनी कोई खुशी मना रहे होते हैं, अपने मुल्क की खुशी मना रहे हैं, अपने यौम आज़ादी मना रहे हैं, या नेशनल डे मना रहे हैं, या शादी ब्याह की तकरीब होती है, उसमें जो खुशियां मनाई जाती हैं उसमें कहते हैं वो जी बस अब हमें आपे से बाहर हो जाते हैं. अगर कोई उस खुशी के मौके पर कोई जिक्र करे कि भाई अल्लाह रसूल का नाम ले लो तो वो माइंड कर जाते हैं. ओके, ये क्या तुम रंग में भंग डाल रहे हो, ये क्या तुम मना कर रहे हो, या ये क्या तुम पाबंदी लगा रहे हो, इस तरह के वो कुछ तासुरात के इज़हार करते हैं. कतर ने नेशनल डे की खुशी मनाते हुए अपने जो स्लोगन आज के लिए दिया है वो बड़ा जबरदस्त है. नहमदुहु या दल अर्शिल अज़ीम, ए अर्श अज़ीम वाले मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं. क्यों हम बयान कर रहे हैं? उन कामयाबियों पर, उन अचीवमेंट्स पर जो कतर ने हासिल की है. आप Yes, he wanted to say about the slogan that we wanted to thank Almighty for all the achievements and the kind of benedictions we have been bestowed upon. So this is what he wanted to say regarding today's celebration. He says that Qatar wanted to keep the Almighty God and first and foremost followed by different things. Of course, I completely agree. I think the God Almighty is very kind to this country, but God Almighty also said that the people they have to try, and I think the people of this country, the leadership in this country, they have that spirit, because God have ordained that I don't change unless you make an effort. So this country has listened to God's way. They follow that way. So that's what God is very, and I think that's very nice completely of you that God judges the intentions. Yeah, absolutely. That's very correct, sir. And now moving to one of the questions we wanted to know, and I think the Bangladeshis as well, that the two countries, they've been sharing a wonderful relation for so long. So what is the vision to strengthen from your part and perspective? First off, I would say that these are the two brotherly countries, and we enjoy excellent relations. We don't have any issue, any contentious issue that can hold us back. And on the other hand, we have a lot of opportunities ahead of us where we can work together. I would say that there are 3 major pillars of the relationship. Again, I am using the word 3 this evening. After 2 months, if you call me, then maybe I can come up with 2 more points.
5 points. Yeah, the first pillar is, of course, the huge presence of the Bangladeshi diaspora here, which I said that it's about 400,000. And they're employed in the construction sector, in the service sector. We also have some professionals, doctors, engineers, bankers, and professionals in other areas. Good. We have a good number of imams and muezzins in this country. And this diaspora is a bridge between the two countries. I call it, it's a kind of a constant handshake between Bangladesh and Qatar. So we'd like to, in this area, our vision is to bring in some more professionals so that we can change the demography a little bit because this is a very good market for the professionals as well. I have spoken to our Bangladeshi professionals who are working here, and they tell me that they are having a fantastic experience in this country from all points of view, the living-wise, profession-wise. So we'd like to share those stories to the prospective employees who can come and join the workforce here. This is one. The second pillar is our trade relationship. Good. And which is also in a very good shape. It has crossed the $1 billion mark, thanks particularly to our import of LNG from Qatar. So now, in this sector, our vision is to increase the number of items from our side, and we'll be working towards the end. The third pillar, which I would call, is rather a basket, where we have many items, including investment and cooperation in other areas. We'll be working in that area as well. We want Qatari investment, and for that we have the requisite environment in our country. We have what we call the Bangladesh Investment Development Authority and the Special Economic Zones Authority. So we'll facilitate Qatari investment in Bangladesh. The idea is to transform each item in the third basket into one, so that the relationship stands on a solid foundation. So that is our vision for this relationship. And I'm happy that both the countries are working to achieve those goals. MashaAllah, बहुत अच्छे पॉइंट का आपने जिक्र किया बतौर खास कतर और अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, और कहते हैं कि इसमें भी इस सवाल के जवाब में भी इन ताल्लुकात के हवाले से भी मैं 3 पॉइंट बयान करना चाहूँगा। और 3 पॉइंट्स में आपने सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट लिया कि कतर में बांग्लादेश के डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं और मुख्तलिफ अहम शोबों पर काम करने वाले अफराद भी हैं, और आइम्मा और मुअद्दिनीन की बड़ी तादाद भी यहाँ कतर में मुकीम है, और ये एक इन दोनों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का एक बड़ा जरिया है। और इसमें हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसा मसला है नहीं कि जिसमें हम कह सकें कि जी इस बिना पर हम ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे या इस बिना पर हम पीछे रह सकते हैं। हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी भी मामले में। दूसरा पॉइंट जिसका जिक्र आपने फरमाया वो ये कि तकरीबन मोर देन $1 बिलियन से ज्यादा इनकी ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान, और सबसे ज्यादा जो LNG कतर की जो कुदरती माया गैस है वो बरामद की जाती है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश अपने मुख्तलिफ अशिया यहाँ बरामद करता है। और मुस्तक़बिल में तीसरे पॉइंट के हवाले से वो बतौर खास ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें भी कोई एक शोबा नहीं है बल्कि वो एक पूरी एक बास्केट है, और उसमें उस बास्केट में बहुत सारे शोबों को मैं यकजा करना चाहूँगा, और उसमें फिर एक से ज़्यादा शोबों को और एक से ज़्यादा निकात को उसमें शामिल करते हुए वो कहते हैं कि हमें इस वक्त जो मौजूदा सतह है हमारे ताल्लुकात की हम उसे बहुत मुतमईन हैं, और मुस्तक़बिल में इनमें मज़ीद इजाफे के मौक़े मौजूद है और हम इसमें इजाफा करना चाहेंगे। Your Excellency, I have a question. How does the embassy give access to the migrant workers in supporting them? Like if there are migrant workers who are in need of the embassy, is it easy for them? Is the embassy accessible to them? And how does the embassy support them? Oh, absolutely. We guess that this destination, Qatar, is a favorite place of Bangladeshi migrants as well. Absolutely. If you ask me, what is my job?
I would say that it's twofold. One is to strengthen the relationship with our brotherly country, Qatar. And the second is to take care of the Bangladeshi diaspora. And we have one dedicated wing in the embassy. We have 2 officers and other staff members to take care of the Bangladeshi diaspora. So whenever they have any problem, they can come to the embassy. We have a hotline. Whenever they want, they can call us. And we also try to reach out to them. And this is a very effective system we have put in place. So as far as the passport issue is concerned, for example, because of the COVID situation, we have to follow the local protocol, health-related protocol. So not many people can come. So we try to follow that protocol. What we have done, we have introduced the online passport service. So people can apply online. It's easy. And secondly, we are also going out of Doha to the areas where we have big concentration of the Bangladeshi people. We call it mobile consular service. So every Friday, we go there and we give them that service. So it's not only people are coming to the embassy, we're also going to the people. And we are trying to take advantage of the technology as well. So there is some centers you decided that next Friday will be there, that place. You are announcing that? Yes, of course. We are announcing it well ahead. And we are also contacting people there so that it is widely circulated and optimum number of people can take advantage of the services. Your Excellency, at this point, I would like to take an opportunity or take a chance of rendering our services as a medium of your announcements. Probably you can use FM 107 Urdu Radio as one of the mediums to announce this kind of services, because we have a lot of listeners from Bangladesh. So it will be easier for them, and it will be easier for us to give your message to a much wider audience. So I think we could be a good partner for you. Well, I think this is very nice, and I think we can shake hand on that. Fantastic. And I welcome the opportunity. Good. We'll reach out to them. And I would like to thank you in advance. Thank you so much. Thank you so much. And I think we will celebrate this over a cup of coffee in a bit. Absolutely. Also, Absolutely. Your Excellency, on the 25th, as a matter of fact, Urdu Radio, FM 107, has sponsored a cricket tournament in the celebration of National Day. So India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lankan teams, the local teams, will be playing a cricket tournament in association with the Qatar Cricket Association. And FM 107 is the sponsor. And I would like to take this opportunity of inviting you over there to witness the game and to be a part of it, the celebrations. Well, we are cricket lovers. Fantastic. And we are crazy for cricket. And cricket in a setting like this is always fun to watch. Good. So I'll send you a formal invitation So that is a perfect statement from your side. तो जितने भी हमारे listeners हैं उनके लिए खुशखबरी है कि बांग्लादेश के एम्बेसडर जशीमुद्दीन साहब हमारे साथ रहेंगे हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में 25 तारीख को एशियन टाउन में. तो आप लोगों से इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. और कतर और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश एम्बेसी जो खिदमात सर अंजाम दे रही है यहाँ कतर में रहने वाले लोगों के लिए, तो उसमें दो अंदाज है. एक तो जिम्मेदारी है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए, वो काम किया जा रहा है. लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश की एम्बेसी कतर में रहने वाले बांग्लादेशी या बंगाली भाइयों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहती है. और उसके लिए एम्बेसी में या सफारत खाने में बतौर खास एक शोबा कायम कर दिया गया है और वो उन मसाइल को हल करती है. फिर ऑनलाइन वीज़ा, ऑनलाइन पासपोर्ट के हुसूल की वो सर्विस फराहम कर दी गई है. उसमें आप जितने बांग्लादेशी भाई हैं यहाँ वो अपने पासपोर्ट के हुसूल के लिए ऑनलाइन उसके एप्लीकेशन दे सकते हैं. फिर साथ ही सफीर मोहतरम ने ये ऐलान भी फरमाया कि यहाँ कतर में रहने दोहा से बाहर भी जितने बड़ी आबादी रहती है बांग्लादेशी भाइयों की, उन तक पहुंचने के लिए हर जुमे के रोज ये किसी न किसी इलाके का इंतखाब करते हैं और वहां जाते हैं और वहां जाके उनके मसाइल को हल करते हैं. As a matter of fact, sir, Your Excellency, at this point I would like to ask you something. Friday is a day that everybody goes out, like, Yep. They want to spend this time with the family, and on Fridays you're working with the people of the community.
So how is it? What do you do in your leisure time? How do you spend your time with your family, with friends? What do you do in your leisure time? Well, first off, after coming here, one thing is constant, is work. So we work a lot. We, particularly during this time, we work very hard for our people. And, after office, my colleagues know that I call them even after office very late at night because I am a night owl. So I send out messages very late to my colleagues. And during the weekends, we go for this consular service every Friday. And in addition to that, one of the Saturdays, we keep the embassy open, particularly for the families, people who live here with families, so that they don't, kind of have to come during the weekdays. But yet, we try to manage some leisure time. And during that time, what I do, I try to give time to my family, my wife and 2 children. They are grown up. One of them he has left for Athens. He is studying there. My daughter, she is a student in a university in London. She is doing now online classes from here. In addition to that, I listen to a lot of music. Even when I work, there is some music playing in the background. Yeah, we love music. And if time permits, I try to write. I have recently bought some classics, the Robinson Crusoe and Jane Eyre, and I hope to read them as well. And I have some plans to write a number of books, at least 2 books, on my experience in Qatar. So Fantastic. This is how I We'll be looking forward to those books, inshallah. Inshallah. And it looks like you are in the real sense, because you said that you don't sleep much and you're working late in the nights. And that's fantastic. So we will try and get a couple of callers because a lot of our listeners would want to interact with you at a time like this. तो इस वक्त जो भी लोग हमारे को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्सेलेंसी से बात करना चाहते हैं, वो लोग आपको कॉल कर सकते हैं. हमारी लाइंस खुली हुई हैं और आप कॉल करके हिज एक्सेलेंसी से अपने सवाल पूछ सकते हैं. तो ये एक कॉल है हमारे पास, हम कॉल लेते हैं. और ये नाम क्या बताया है? ये अबुल बशर साहब, अनवर हुसैन साहब. अनवर हुसैन साहब हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी अनवर साहब. আসসালামু আলাইকুম. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. আমি আই এম আনোয়ার হোসেন আকন বলছি. जी अनवर साहब, खुश आमदीद, वेलकम. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे सफीर मोहतरम? Yes, I was listening to our His Excellency. So Mr. Anwar Hussain, please, you can go ahead and speak to His Excellency. He's right here. He's listening to you. Yes, shall I talk to in Bengali or English? Whatever you like, sir. It's your platform. You the boss. First of all, I want to understand. First of all, I want to welcome MD Jasimuddin to Qatar. Thank you. In 3 months, he met with all the most of the leaders of our community, and a lot of commitment. And inshallah, he will do a lot of very good efforts in Qatar. And recently, we had one virtual program with the Ministry of Administrative Development Affairs and Embassy regarding the labor reform. At the same time, I want to say something in Bengali. প্রথমে আমি হিজ এক্সেলেন্সি রাষ্ট্রদূত এমডি জসিমউদ্দিন কে কাতারে স্বাগত জানাচ্ছি. থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ. অল্প কয়েকদিনে তিনি কমিউনিটির সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে মত বিনিময় করেছেন এবং এটা চলছে. আমি শুধু তার এই 3 মাসের অভিজ্ঞতা কেমন ভাবছেন আপনার আগামী 3 থেকে 4 বছর কাতার যাবে, যা অন্য দেশের তুলনায় কেমন হবে? ধন্যবাদ. Okay. Oh, thank you very much. He asked me, well, first of all, he's a very active member in our community. And I had the opportunity of meeting him on a number of occasions. Good. And they organized one virtual conference on the labor law reform. We had very good discussions.
the community leaders and the representative from the Ministry of Labour and the ILO rep, myself and my colleagues were there. We had fantastic discussions. He was asking me how, I think that he wanted to know how is it going to be for me work-wise in the course of my assignment here. I think that is what he asked me. Well, I think I'm here, as I said, for two broad purposes. One is to strengthen the bilateral relationship between Qatar and Bangladesh, and the second one is to work for the Bangladeshi diaspora here. And as I elaborated with regard to the diaspora, I have some plans. And we would like to further improve the consular services for our Bangladeshi people, taking advantage of the technology, as well as going out of Doha to different parts of the country, and to give the service during the weekends. So I hope that at the end of 3 years, I would like to see developments in the three pillars I have just mentioned in the beginning of the interview. And I would like to see more interactions between the two countries, particularly at the official level between the two foreign ministries. And we look forward to a meeting early next year. And also high-level political visits. We very much look forward to welcome His Highness Jamik to Bangladesh. And we'd also like to see the businessmen of the two countries, they start discussions between the two countries, because they are the ones who will be identifying different sectors for cooperation. So I think at the end of 3 years, I'll be very happy to see some of the numbers go very high. For example, the trade figure, the investment figure, and also if we can bring in some professionals and workers for different development activities here, I'd be very happy. Inshallah. And finally, a message to the listeners of Urdu Radio and the Bengali diaspora. What will your message be? Well, first off, before I conclude, I would like to thank all of you for inviting me. We would like to thank you for being here and taking out time from your very busy schedule, sir. Yeah, it's my pleasure. To the listeners, I would say that tune in to listen to this fantastic radio program. You have the amazing anchors here, very experienced ones, with a lot of experience, and I think that this is a good interactive program to reach out to our community here, and also to talk about the different kind of activities going on here. I think in the coming days you'll be very busy. So I think listeners will benefit from listening to this radio station. And for the Bangladeshi people, I will say that I am proud of you. Do hard work, follow the local rules and customs, share the good stories about Bangladesh. And once again, congratulations on our Victory Day, which we observed on 16th of December. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন এবং স্থানীয় নিয়ম কানুন মেনে চলবেন। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। सर सामीन, सफीर मोहतरम का यहाँ जितना वक्त आपने अता फरमाया और अपने वक्त में से जो वक्त उर्दू रेडियो के लिए दे सके वो उन्होंने दिया, और अब इसी पर हम इक्तिफा करना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब जसीमुद्दीन साहब का कि वो यहाँ तशरीफ लाए और कतर के नेशनल डे या कौमी दिन के मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया बांग्लादेश और कतर के ताल्लुकात के हवाले से, और मुस्तक़बिल में उनके जहन में जो तसव्वुरात हैं, जो मंसूबे हैं, उनसे भी हमें आगाह किया कि किस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को वो मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी अवामी जमहूरिया बांग्लादेश का दौरा करें और उस दौरे पर तशरीफ़ ले जाएं। इस तरह बांग्लादेश के आला अहलकारान भी यहाँ दोहा तशरीफ़ लाएं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम इज़्ज़त माब जसीमुद्दीन साहब कि आप हमारे उर्दू रेडियो के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमें गुफ्तगू का मौका अता किया। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Pleasure. Thank you. Shukran. Thank you so much. है और हमें शरीक होना भी चाहिए। और अब से लेके इंशाअल्लाह कुछ 1 घंटे तक तकरीबन हम चाहेंगे हम बतौर खास उन अफराद को
نمائندگی دینا چاہیں گے اپنے خیالات کی, اپنی خوشیوں کے اظہار کی کہ جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں دوحہ میں مقیم ہیں, دوحہ میں رہتے ہیں, اور قطر کے اس نیشنل ڈے, اس قومی دن میں وہ بھرپور انداز میں حصہ لے رہے ہیں. اور اگر کسی ملک کی کمیونٹی کی قیادت اگر کسی فرد کے پاس ہوتی ہے